Bismillahirrahmanirrahim. Good morning students and Assalamu alaikum. I am here for lecture number 2 of week number 2. वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 मैं आपको आज फिर बताने आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 8 हमने कल पढ़ा था, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स और स्नोई इवनिंग। तो इसकी हमने की थी जी रीडिंग की थी और हमने इसकी समरी पढ़ी थी, प्लस वी हैव लर्न द ग्लोसरी मीनिंग्स। ठीक है, हमने पोइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, वी हैव लर्न द समरी एंड वी हैव डन आल्सो द ग्लोसरी मीनिंग्स। टुडे वी विल डू द कॉम्प्रिहेंशन. फॉर एग्जाम्पल, वी विल सॉल्व द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स, यू हैव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर ALS notes, but still I will explain the questions and I will also give you the answers. आपको याद होगा कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था कि स्टॉपिंग बाय वर्ड्स जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि कैसे वो एक जंगल में रुकता है और उसके घोड़े को अजीब लगता है उस जंगल में रुकना, बट ही फाइंड्स वेरी मच पीस एंड ब्यूटीफुल नेचर ओवर देयर. ही फील्स वेरी रिलैक्स, ही फील्स वेरी गुड. द पोएम पॉइंट्स आउट at the attractive and exciting beauty of nature and simultaneously hints at the need to carry on with the daily affairs of life. For example, जो वो end पे कहता है that I have two promises to keep. The world of fantasy is very much inviting, but one must maintain balance between the world of reality and imagination. This is basically the theme of the poem. ये जो था हमारी पोइम का थीम था, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाया था. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 1 में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से अब रिलेटेड हम क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे. ग्लोसरी आप लोगों ने होपफुली लर्न कर ली होगी और आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, समझ भी आई होगी होपफुली. नाउ, हु इज स्पीकर इन द पोइम? नज़म में बोलने वाला कौन है? ओब्वियसली द पोइट हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोइम. ठीक है, और यू कैन से दैट द स्पीकर इन द पोइम इज द हॉर्स राइडर. ठीक है, whom does the speaker refer to the first stanza of the poem? सेकेंड क्वेश्चन है कि पहले किते में बोलने वाला किसको हवाला देता है, यानी कि वो किसके हवाले से बात कर रहा है. तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि वो उसको पता है कि इस जंगल का ऑनर कौन है. सो द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड. द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज द स्पीकर रेफर्स टू द ऑनर ऑफ द वुड. Why does the speaker, third question number is that, why does the speaker stop on the darkest evening on the year? वो कहता है कि बोलने वाला यानी जिसने ये पोइम लिखी है या जो बोल रहा है वो साल की तारीख तरीन शाम में क्यों रुकता है? आपको क्या लगता है कि क्यों रुकता है? Maybe he loves to enjoy the beauty of nature. But let me tell you the answer. He thinks to stop on the darkest evening of the year because the woods are lovely, dark and deep. वो साल की तारीख तरीन शाम को रुकने के लिए इसलिए सोचता है क्योंकि खूबसूरत जंगल खूबसूरत, तारीख और घना है. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा पोइट है, ही लव्स टू डिस्क्राइब नेचर. उसको नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है. दैट्स वाई ही स्टॉप्स देयर to enjoy the lovely woods. The question number 4 is, why does the horse impatiently await the next move of his master? वो कहता है घोड़ा क्यों बेचैनी से अपने मालिक की अगली हरकत का इंतज़ार करता है. So the answer is, the horse impatiently awaits the next move of his master as there is no farmhouse nearby. क्योंकि उसको इर्द गिर्द कोई फार्म हाउस नज़र नहीं आता है, इसलिए वो अपने मालिक की हरकत का बेसब्री से इंतज़ार करता है. The would not be able to get any food. He is also fearful that he might have made some mistake. और उसको ये भी लग रहा है कि घोड़े को ऐसा फील हुआ है कि यहाँ रुकना कहीं उसकी गलती तो नहीं. The question number 5 is, the speaker in the poem is captivated by the beauty of nature. Why does not he stop for long to enjoy nature's beauty? वो कह रहे हैं कि बोलने वाला कुदरत की इस खूबसूरती पर फरीसा है, वो क्यों देर तक इसका मज़ा लेने के लिए नहीं रुकता.
तो आपने लास्ट में पढ़ा होगा, लास्ट टेंसा में, कि पोइट सेज दैट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। देखिए बात यह है कि इसमें आंसर इज़ दैट एवरीबडी हैज़ टू मूव ऑन, हर किसी को आगे बढ़ना है। द लाइफ डज नॉट स्टॉप, ज़िंदगी नहीं रुकती है। Here the answer is he is captivated by the beauty of dark, deep and lovely wood, but he has promises to keep. That is so. He has some worldly task to accomplish, therefore he does not stop there for long. So these are the 5 questions that you have to learn, plus you have these exercise that is filled on your notes. You can see the notes, you can take the guidance from there. For example, if you come on page number 85, you see that part D, circle the correct options. The poem is suggestive of profound thoughts about a scene of words in water, a reality of life and death, a song of enjoyment. So the answer is B, the reality of life and death. जो पोइम जो है वो अपनी रियलिटी बयान करती है, दैट द आंसर इज अ सीन ऑफ वुड्स इन विंटर. You would have these answers in your book, ALS notes. The poem presents a conflict between poet and his friend, the obligation of life and desire to escape from them, the poet and forces of nature. The answer is B, obligation of life and desire to escape from them. यानी कि ज़िंदगी के फरीज़े भी हैं और उनसे बचने की ख्वाहिश भी है. पोइम जो है वो इसका एक कन्फ्लिक्ट है. आफ्टर रीडिंग द पोइट वी feel fed up of life, we wish to sleep for a long time, and we get ready to face the challenges of life. The answer is C, get ready to face the challenges of life. The poem conveys us only a surface reading, a profound thought, not meaning at all. The poem basically conveys a profound thought. The correct answer is answer number B, कि हमें एक पूरी थॉट देती है, एक पूरा नज़रिया देती है. Darkwood symbolizes darkness spread around the poet, death and departure to another world, darkness in the mind of the poet. No, it demonstrates the death and departure to another world. That is answer number B. The other things of the exercise I will explain in the review number 2 of unit number 5 to 8. So this is it about the unit number 8. Now I will tell you about the letter writing pattern that you know very well, आपको अच्छे तरीके से पता है, but let's go towards grammar side. So let's move towards English B side, that is grammar and composition, and you have to learn the letter number 11. The letter statement is write a letter to your friend thanking her for the hospitality during your visit to her house. You know the pattern very well. This is not a pattern. You have to write down here examination hall, comma, city A.B.C and the date with April 15, 2017 dot. I will share the picture of a letter pattern, but you have to learn letter number 11. So आपने लेटर लिखना है अपनी दोस्त को और उसका आपने शुक्रिया अदा करना है ड्यूरिंग योर विजिट टू हर हाउस, यानी कि आपने उसके घर का दौरा किया था और उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी मेहमान नवाजी का आपने शुक्रिया अदा करना है. लेट्स सी द कॉन्टेक्ट. डियर सबा, I reached home last Sunday. I had a comfortable journey and reached home safe. मैं लास्ट संडे को घर आई हूँ, मेरी आपके साथ. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, बहुत पुरसकून मेरा सफ़र रहा. एंड रीच्ड होम सेफ़, और मैं अपने घर खैर आफ़ियत से पहुँची हूँ. आई स्पेंड वेरी गुड टाइम विद यू, मेरा तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है. आई इन्जॉयड योर कंपनी, मैंने तुम्हारी कंपनी को बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुई, मैंने तुम्हारी कंपनी से बहुत इंजॉय किया. आई शैल नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ बिरयानी एंड कौरमा यू कुकड वन डे. मैं वो बिरयानी और कौरमे का टेस्ट कभी नहीं भूलूंगी जो तुमने मेरे लिए बनाया था. आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप टू मरी, मैं तुम्हारे मरी के ट्रिप का, तुम्हारे मरी के दौर विज़िट का, ट्रिप का
शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दैट यू स्पेशली अरेंज फॉर मी, जो तुमने ख़ास तौर पे मेरे लिए अरेंज किया। आई विल मिस यू वेरी मच, मैं तुम्हें तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करूँगी। कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल फॉर देयर काइंडनेस एंड लव। मैं अपने अम्मी अबू नहीं सॉरी कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल, यहाँ पर वो आंटी और अंकल यानी कि अपनी फ्रेंड के अम्मी और अबू यानी कि आंटी और अंकल को थैंक यू कह रही है फॉर देयर काइंडनेस एंड लव, और उनकी मेहरबानी और मोहब्बत के लिए। दे रियली मेड मी फील एट होम, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा महसूस करवाया। दे फील मी लाइक दैट आई एम एट होम विद लव योर सिंसियरली XYZ। सो you have to learn letter number 11 at home. This is a task of lecture number 2 of week number 2. I hope that you have enjoyed the lecture. Stay safe, stay home, stay blessed. Allah Hafiz.